Hello everyone, very good evening everyone. Pranam pranam. Audio video clear achi? Please take कहि दियो audio video clear अछि ना नहीं? Pranam pranam. Okay, so start करिबा class. पिला सब आज कुआडे गले? Audio video सब clear अछि? Okay. Good evening everyone. Okay, so start करिबा class. EVS part 2 आज अछि. टिके प्रॉब्लम जदि आसिला लाइक मु टिके स्लो कहिबी फिर भी जदि टिके जणा पडलानी वॉइस स्लो आसिला देन प्लीज मते कहिबो टिके पिच हाई करिबी. ओके चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. फास्ट वेदांग क्लासेस रो बैच अछि वेदांग टीचिंग्स रो भी बैच अछि अपन मन का करे ना जोते फीवर हो जाई छी. ओके सो को वेदांग क्लासेस रो बैच आपण माने जानि चंती पीओ आरआई एआरआई रो बैच लॉन्च हे सारी छी ऑलरेडी क्लास भी स्टार्ट हे सरलानी आपण मन को पई 2 दिन फ्री क्लासेस भी थिला आपण माने जाई की देखिबा पाई हैला. देन महापैक आपण माने 3499 रे ताको नै एक्सेस करि परिबे जोथरे कि आपण 1 ईयर जाय जहां भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हमर आसुची आमे जहां भी आपण मानक पई बैच लॉन्च करिवु सेटा या अंडर ही आसी जीवो. सो बेटर पीओ पई आपण सेपरेट बैच नेबे देन सीजीएल पई सेपरेट बैच नेबे तो माय सजेशन विल जस्ट टू टेक द महापैक बैच एंड किछि क्वेरीज अछि आपण माने बैच परचेज कला बेले एप्लीकेशन ने किछि प्रॉब्लम आसुची किछि भी प्रॉब्लम फेस करूसंदे देन टू कांटेक्ट टू दिस नंबर. ओके आपण माने सब गाइडेड पाइबे. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कौन अछि ईवीएस रो. टेल मी so which of the following is not a greenhouse gas? Which of the following is not a greenhouse gas? Good evening everyone. मते को greenhouse gas रो हमें कहा को एलिमिनेट करिबा which of the following is not. Okay go. Option D nitrogen. Very good. So the right answer कौन हबो ना yes ma'am option D ही हबो. Option D will be the nitrogen gas. But carbon dioxide gas को हमें कौन कहूचे सेटा गोटे लाइक हमर कौन ग्रीन हाउस गैस ना नहीं yes ma'am एटे नॉट पचारि छी सेति लागि हमें ताको एलिमिनेट कर दोचे कागु ना नाइट्रोजन को. जदि हमें देखिबा कार्बन डाइऑक्साइड सो CO2 जोडा रहूची दिस इज अ गैस जोडा की कॉज करूची हमर कौन ग्रीन हाउस ताको हमें कहि परिबा दिस इज अ कलरलेस दिस इज अ ऑर्डरलेस गैस. Okay, the produced go through hoji na by the bonding of the carbon and the organic compounds. Organic compounds. Okay, सेठु हमें easily carbon dioxide gas आसी जाउछ हमें ताकू देखि पारुछे. Then आपण मान जानचंदी रेस्पिरेशन रे भी obviously हमर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज हुए तो रेस्पिरेशन प्रोसेस रे भी ये टेक पार्ट नउछे. Also greenhouse gas. Yes, very good. So primary हमें जो देखिबा greenhouse gas हमें नै परिबा जे कि ट्रैप करी कि हीट को
जे कि कोन ग्लोबल वार्मिंग रे मेन कॉज करछि दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड ओके फॉसिल फ्यूल सहित फॉसिल फ्यूल कंबशन हैला डिफॉरेस्टेशन हैला एथु हमें सोर्सेस रु पाई परुचे कार्बन डाइऑक्साइड देन मीथेन को आपण मान जानछन द मेन ग्रीन हाउस गैस आमे काहू कहूचे द इंपोर्टेंट एंड द मेन ग्रीन हाउस गैसेस अमंग ऑल आमे कहूचे दैट इज द मीथेन yes Vivek so this is आमे कोन कहि परिबा this is a potent greenhouse gas जोथरे कि more than आमे जो देखिबा कार्बन डाइऑक्साइड टू कंपेयर करिबा this is 25 more than like 25 times more than effective than the carbon dioxide so एतिकी से hazardous एतिकी dangerous आमे काटू कहि परिबा ना कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन so this is the main greenhouse gas okay very good चलो आमे आकु सोर्सेस कोठु पाउचे ना हमर कैटल फार्मिंग हैला जेमिति कि हमर कोन किछि भी एनर्जेटिक फॉर्मेशन आमे करूचे या फिर आमे वेटलैंड्स हैला लैंडफिल्स हैला ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन हैला एथु हम माने कोन पाई पारुचे ना मीथेन गैसेस को कोन एक्सट्रैक्ट करि पारुचे सेठु हमें पाई पारुचे सेम थिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड आपण माने कोठु पाइबे कहबे दिस इज आल्सो ए पावरफुल ग्रीन हाउस गैस बट आमे कहि परिबा कि द ग्रीन हाउस गैस एंड as a oxidizer commonly known as what na laughing gas बोले आपण माने जानि थिबे क्वेश्चन रे प्राय टाइम आसे which gas is known as a laughing gas then हमें ताको nitrous oxide को चूज करि परिबा yes or no yes ma'am we can do yes so याको हमें कहि परिबा this is 298 more potent than the carbon dioxide like केते ना ओवर 100 इयर्स को हम उटे रिकॉर्ड को कोन सिंक्रोनाइज करिचे ताकू देखिचे कि ये 298 इफेक्टिव देन द कार्बन डाइऑक्साइड दैट मींस ये सेति की हैजर्डस क्लियर सो नाइट्रोजन आपण माने जानचंदी सबुठी हमरा मिलुचे बाकी दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट केमती कोन आसे टोटल प्रोसेस फोटो भी आपण माने जानि पारथु हमर ओजोन लेयर रे होल हिजी बिकॉज़ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दोस ग्रीन हाउस गैसेस ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन which sector is the largest source of human caused carbon dioxide emissions worldwide? What is the right answer? Tell me. आर्ट्स पिला साइंस पिला रे कोन अछि एग्जाम में थोड़ी ना तमे कहबो आर्ट्स पिला मोर ईवीएस पकान दिस इज द वन डे एग्जामिनेशन आपण माने को टास्क अछि ओके so which sector is the largest source of human caused carbon dioxide emission worldwide options are transportation energy production agriculture or forestry what will be the right answer what will be the right answer option na transportation nahi option A will be not nebi class or rest nebi what will be the right answer agriculture no that is right answer kon hoba na ma'am energy production kon achi which sector is the largest source of human caused carbon dioxide human caused artificial ame asiba kotu asiba energy production hoba right okay so ame dekhuche the process of generating the electricity and the heat often by the burning coal hela by the oil hela even by the natural gas hela e sabu amara asuchi main contributor ame कार दिखाय ना 42% of the global कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमर कोन आसुची ना ए एनर्जी प्रोडक्शन रु ही आसुची एग्रीकल्चर काई होबा पावर प्लांट इंडस्ट्रियल एनर्जी यूज ए सब इंडस्ट्रियल सेक्टर पर मैं एथरे इंक्लूड करि परिबा जोत्र को कोन ना एनर्जी प्रोडक्शन होउची दैट इज द मेन ह्यूमन कॉज्ड कार्बन डाइऑक्साइड ओके चलो so mainly आपण माने मन रखिबे कोठु आसुची कार्बन साइकिल इज नॉट दैट इंपोर्टेंट फॉर द लाइक पर्पस हम क्वेश्चन डिमांड अनुसार बट आपण माने मन रखे पड़िबो ह्यूमन कॉस्ट एते बेला आसिला आपण माने काहा को रिलेट करिवे ह्यूमन कॉस्ट आसिला माने आपण माने आर्टिफिशियल थिंग दैट मींस हमर कोन इंडस्ट्रीज हैला इवन द पावर जनरेशन सेक्टर पावर प्लांट्स हैला इंडस्ट्रियल एनर्जी सेक्टर हैला एको रिलेट करिवे नेक्स्ट देखो व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू ग्लोबल वार्मिंग काहा को रेफर करूची मते को what does global warming refer to the options are cooling of the earth not at all then rise in average surface temperature increase in sea level melting of glaciers only
तो ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली एमान को कोन रिलेट करियो बट डायरेक्टली हमें कहले कोन हबो राइज इन द एवरेज सरफेस ऑफ द टेम्परेचर ओके yes rise in average surface temperature हमें कहि परिबा कूलिंग ऑफ द अर्थ तो बिल्कुल हबनी बिकॉज़ ग्लोबल टेम्परेचर से तो तार किसी रिलेशन नहीं बट राइज इन द एवरेज सरफेस टेम्परेचर हमें कहि परिबा द इंक्रीज इन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैस accumulation global warming is a subset of the climate change so climate change हमर जहां भी होची global warming को हमें कोन कहि परिबा this is a subset of the climate change impact आसे indirectly impact कहा ऊपर आसे ना melting of ice ऊपर आसे rising of the seas आसे extreme weather change हुए due to the कोन ना global warming but direct effect होची कोन rise the average sea temperature sorry average surface temperature after that उडा indirectly आपण माने relate करि भाई okay next question देखो which international agreement aims to limit global temperature rise to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial level. Above pre-industrial level. कौन हैला स्नेहासिस? हैला कौन सबू? Very good. So right answer कौन हबो? को क्रिप्टो प्रोटोकॉल हबनी क्रिप्टो प्रोटोकॉल हमर 1997 रे हेतिला फोकस ऑन द कोन लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज ओनली दैट मींस कार्बन एमिशन ऊपर से पळे आसिला से कार्बन एमिशन ऊपर पळे आसिला कोन क्रिप्टो प्रोटोकॉल 1997 रे हेतिला ताकू रिलेट करन एथरे ओके तो राइट आंसर कोन हबो ना मैम पेरिस एग्रीमेंट yes Paris agreement हबो केबे हेइतला ना 2015 at COP21 एटा हेइतला 2015 वाला COP21 सहित रिलेट करा रिलेट करि परिबो yes जो थरे की तार मेन एम कोन थिला ना कीप द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस strive at the 1.5 डिग्री सेल्सियस बट तार यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन बहुत सारा कंट्रीज थिले बट मेनली हमें कहि परिबा वॉल्यूंटरी नेशनल टारगेट्स थिला जोटा कि आछि कोन एनडीसीएस ता अंडर आसीबो कोन ना हमरा पेरिस एग्रीमेंट ओके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आपण माने रिलेट करिवे 1987 सहित 1987 याको रिलेट करि परिबे इजीली 1987 ने मॉन्ट्रियल क्रिप्टो होतला 1997 रे देन 2000 रे हमरा सेतला कोन ना पेरिस एग्रीमेंट ओके एटा हमर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस दैट मीन सीएफसी सहित रिलेटेड याको मॉन्ट्रियल सहित कोन ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन सहित नै छी दैट इज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस सहित आपण माने रिलेट करि पारिबे गुड इवनिंग yeah I'm as you are looking okay देखो जेनेवा कन्वेंशन सहित हमें कोन रिलेट करि परिबा जेनेवा कन्वेंशन सहित हमें रिलेट करि परिबा द प्रोटेक्टेड विक्टिम ऑफ द वॉर लाइक हमर कोन जे कोन सेंती वर्ल्ड वॉर 2 सरी जाईची वर्ल्ड वॉर 3 सपोज हैला देन द ह्यूमैनिटेरियन लॉ कोठु आसीबो ह्यूमैनिटेरियन लॉ हमर जेनेवा कन्वेंशन हमकु प्रोवाइड करिवो सो हमें ताकू ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड रे रखिबा इज दैट क्लियर ओके क्लाइमेट चेंज सहित ताकू रिलेट करिवनी क्लाइमेट चेंज सहित तीनटा को रिलेट करिवो ओके गोटे रहबा हमर 1997 कार्बन इमिशन सहित क्योटो प्रोटोकॉल देन हमर क्लोरोफ्लोरोकार्बन सहित मॉन्ट्रियल को आसीबो पेरिस एग्रीमेंट हमर कोन ना 2 डिग्री सेल्सियस एबव रहिबनी बोली ताकू टारगेट रख क्लियर चलो नेक्स्ट which gas is primarily responsible for the depletion of the ozone layer मते को primarily responsible को gas हुए for the depletion of the ozone layer what would be the right answer पिला सब कोडे जाउछन इवनिंग टाइम रे इवनिंग रे सब पिला कोडे जाउछन राती हेले सब पळे आछो इवनिंग रे कोडे जाउछ डेटिंग रे so which gas is primarily responsible for the depletion of the ozone layer kon hobo na chlorofluorocarbon
क्या चूज करवा ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही चूज करवा कार्बन डाइऑक्साइड कहीं हेबानी कारण ग्रीन हाउस गैस रे पड़ेला नॉट इन्वॉल्वड इन द ओजोन ब्रेकडाउन ओके यस so methane को कौन कहबा ना this is a greenhouse gas we know chlorofluorocarbon को हमें चूज करबा only because this synthetic chemicals used in the refrigeration रे यूज हुए even हमर aerosols रे यूज हुए and breakdown करे ओजोन को हमें कहि परिबा when it exposed with the UV rays UV light से expose करे अच्छा चंदन संग प्लस क्लास चलछि हो प्लस क्लास ता आज ही ओनली अछि ना फ्री तापरे पेड हे जिवो तापरे तो माने कोडे जिवो आसीबो ना मो क्लास को चलो सो रिलीज करे कौन ना क्लोरीन एटम्स किए हमर फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द रिसेंट रैपिड क्लाइमेट चेंज मते को रिसेंटली जो हमर रैपिडली क्लाइमेट चेंज होची व्हाट इज द कोन द मेन कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज को मते व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जस्ट अ मिनट okay so what is the main cause of the recent rapid climate change ताहले हमें कौन कहि परिबा the plate tectonics human activities solar flares or the volcanic eruptions what is the right answer what is the right answer very good कौन हबो ना obviously हमारा human activities ही हबो कौन हबो ना मैम human activities हबो कोथि पय human activities हबो और देखो because we know the activities such as the burning fossil fuels deforestation even if in the industrialization that emits the greenhouse gases that lead to what the climate change that lead to the climate change even जदि हमें कहबा plate tectonic सहित किछ रिलेशन अछि कि ना हमर त कोन स्लो मूवमेंट हे कि प्लेट हमर कोन अर्थ रो लिथोस्फेरिक प्लेट हमर चेंज हुए ता सहित हमर किछ रिलेशन आसीबानी क्लाइमेट चेंज सहित आसीबा नाही देन हमर ऑप्शन कोन अछि द सोलर फ्लेयर्स सहित तो बिल्कुल आसीबानी कारण जतले बस्ट ऑफ रेडिएशन बाहरिबो फ्रॉम द सन सरफेस टू आसीबो क्लाइमेट चेंज सहित तार किछ रिलेशन आसीबो नाही टेम्परेरीली इन्फ्लुएंस करि पारे मे बी हमें कहि परिबा दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेरी रीजन बट दिस इज नॉट एट ऑल परमानेंट ओके इट्स ओके अमित चलो यस हाँ आ गोटे ऑप्शन रहले आपनकर कोन ना वोल्केनिक इरप्शन ताको हमें चूज करि परिबा कि नै मते देखो नो मैम कारण हमें जानि छे द इंजेक्शन ऑफ द एश हेला गैस हेला एंड द लावा फ्रॉम द वोल्केनोज हेला हमें ताको रिलेट करि परिबा बट फॉर द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ही परिबा बट परमानेंट एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे हमें कहा को चूज करू छे ना हमें ह्यूमन एक्टिविटीज जेमिति कि आपन मान को कहले ओके Which of the following is a direct result of global warming? So mate kuha which of the following is the direct result of global warming? Global warming ro direct change कोटा हबो. Which of the following? क्लास को टिके शेयर करो पिला एते कम कोन आज क्लास रे मरुडी पड़ी गला वाला लागु छ मते. कुहा which of the following? Yes, very good. So options कौन अछि ना more frequent extreme weather events कौन पचरिछ ना global warming सहित हमर frequently जदी weather change होउची then हमें कहि परिबा कि yes ma'am this can be the reason more frequent extreme weather event जदी हेला so include the कोन heat waves आसिला randomly हमर continuously heat wave भी बार बार आसुची storms भी आसुची floods भी आसुची even the drought conditions भी आसुची and the wild fires भी आसुची ए सब गुडा गोटे गोटे रीजन नुह कि हमर कोन ग्लोबल वार्मिंग रो तो डायरेक्टली हमें कहि परिबा राइजिंग द टेम्परेचर disturb the climate कोन systems and increase the intensity of the weather patterns so this is the direct answer then our one option अछि increase in polar ice caps decrease in the sea level reduced decrease तो हबनी increase बरम हे जिवा reduce the greenhouse gases सेटा सब कोन opposite answer देछ next चलो next देखो which organization periodically publishes scientific reports on climate change scientifically हमर की publish करूची
वो मते which organization periodically publishes scientific reports on the climate change. So climate change ऊपर हमें को organization को कही परुछ मते को what will be the right answer again चला स्वाधीन पुरोहित Amit option C very good. So that is what ना IPCC WHO कौन करछि ना मैम ए तो हे गला WHO हो हमरा कौन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन that is वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यदि वर्ल्ड हेल्थ लिखि देला that means ये तो हेल्थ ऊपर को पळे आसला ना टिक मारा माने पिला कंफ्यूज होछंती ओके सो ये तो हेल्थ रिलेटेड पळे आसला ताको हमें कौन चूज करि परिबा कि नो मैम ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ हैला डिजीजेस हैला हेल्थ केयर एक्सेस हैला ताको हमें कहि परिबा रिलेट करि परिबा WHO सहित बट हमर कोन क्वेश्चन अछि ना क्लाइमेट चेंज कथा पचार ताहले हम रिलेट करिबानी यूनेस्को कोन अछि ना यूनेस्को हमर एजुकेशन सहित हैला साइंस सहित हैला कल्चर सहित हैला इवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओडिसा रे कोटा अछि ना हमर कोणार्क अछि मन रिलेट करि पारुचो ओनली वन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज द कोणार्क सो कोन हमर वर्ल्ड हेरिटेज साइट सहित हमर कल्चर सहित अडॉप्ट होची रिलेवेंट करके हम आंसर दे परिबा दैट इज द यूनेस्को बट IPCC को हमें कौन कहूचे ना दैट इज द इंटर वेरी गुड दैट इज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज आसी गला माने जोठी आपण माने कर कोन सी ऑप्शन आसुची सेठी टिके मुंड खटेइबो कि यस क्लाइमेट ऊपर होउची ना नाही बहुत जले सी डेटा आसी जाउची सी सेठी हमें कहि पाछु कोन ना सी फॉर द क्लाइमेट सी फॉर द चेंज कहि परिबा यस द यूनाइटेड नेशंस बॉडी दैट addresses the scientific information related to the climate change that is the IPCC periodically एक report like जेमिति हमर एग्जांपल हम कोनै परिबा लास्ट वन हेतिला AR6 हेतिला on the climate trends उपरे रिस्क तार कोन न्यू रिस्क आसुची ताको हम केमति अडॉप्ट करिबा what are about the adaptations so everything is about what na IPCC again जदि यूनिसेफ देखुचे सी अछि ता माने क्लाइमेट करिबनी सेटा चाइल्ड वेलफेयर ऊपर को पड़े UNICEF related to the child welfare and about their rights globally को हमें conduct करी परिबा very good next देखिबा चलो एटा रिलेट कर दिया child which natural process removes carbon dioxide from earth's atmosphere so this is a natural process जोथरे carbon dioxide कोन होजी ना remove हे पारुची earth रा atmosphere ताको हमें कोन कहिबा which natural process the options are photosynthesis combustion respiration or the decay right answer हाँ ना ना बहुत पाखा पाखी दउछ बट जेतु चारटा ऑप्शन देछि मु जानछि से भीतर गोटा को ही दबो उमाकांत बौद्ध राम अमित yes guys you guys are right तो हम कहा को चूज करछे ना फोटोसिंथेसिस को चूज करछे this is the combustion को आपण माने this is not a natural process first of all तो माने भी बी चूज करूछंती this is not at all कोन natural process नाही so photosynthesis को हम काई चूज करबे आपण माने जानि सं this is the process by which plants uses the sunlight to convert the carbon dioxide and water into the glucose and oxygen as a byproduct हमर बाहरी जाय कहूची अमित काई व्यस्त होछ नई टिके देखो आगुआ कोन ओके सो एथिरा हम कहि परिबा तार इक्वेशन कोन आसे ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट मींस हमर कोन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड आसुची 6 CO2 प्लस कोन ना 6 वाटर हमहु से कोन प्रोवाइड करूची ना मैम से हमहु ग्लूकोज दैट इज 66H12O6 ता सहित हमर ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर जाउची तो कार्बन डाइऑक्साइड को से डायरेक्टली कन्वर्ट करि पारुची कि natural process हम दा कहि परिबा कि कहि परिबा so major natural method of the carbon dioxide removal is what that from the atmosphere is the photosynthesis then again combustion को हमें कोन देखिबा ना obviously आपण मन जानछन burning of the fuels wood हैला coal हैला oil हैला gases हैला everything हमें कहि परिबा जोथरे कि हम कोन रिलीज हुए कार्बन डाइऑक्साइड कि हमको डिमिनिश कराए रिलीज कराए कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें आको एलिमिनेट करबा then respiration process हमर कोन आसुची आपण मन जानि सन this is the process where the organisms living organisms मान को consider करिवे so this is the organisms break down food to release
energy producing what na carbon dioxide as a byproduct. As a byproduct amar ko na carbon dioxide एठी बाहरी जाउची. एठी photosynthesis process रे कोन होतला ना as a byproduct oxygen बाहरी जाउतला. Respiration रे कोन होची ना हमें oxygen को inhale करूचे whereas exhaling the carbon dioxide from outside. करूचे ना नहीं को मते. Then decay. Yes Amit, आपण मानकर क्वेश्चन थिला. Then मैम decay कोन कहूची ना decomposition of the dead matter. जिते बेले भी microbes माने decompose करंती, that is the decay. Decomposition of dead matter by the microorganisms is what? Not decay. Okay. मैम गुरुजी खाली क्लास मो क्लास तो गुरुनी कौन प्रॉब्लम है इसी प्रियदर्शिनी तम एंड्रू ही प्रॉब्लम है इसी मोर तो नेटवर्क ठीक अछि. ओके वेरी गुड. तो एज ए रिजल्ट हमें कौन कहि बेरे याकू ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द डिके जोथरे के आपण माने जानि चंती ऑलरेडी डिकम्पोजिशन हेले कोन आसे ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहरे मोर इफेक्टिवली मीथेन बाहरे. But तार verdict में जदि देखिबा this added the greenhouse gases not the removal process but कोन ई greenhouse gas को added कर. Okay buffering कोन buffering कहलानी तम माने नेट प्रॉब्लम मोर किछ प्रॉब्लम नै. चलो नेटवर्क ठीक अछि नो बफर तमने मो मुंडा खराब कर दो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन what is the correct descending order of contribution to global warming among these gases? कौन अछि कहिलो descending order पचारि छी गाइस importance wise कुह descending order रे हमें कौन कहि पाए. ओके फर्स्ट देखो कौन अछि ना कार्बन डाइऑक्साइड अछि, देन अछि मीथेन, देन अछि नाइट्रस ऑक्साइड, देन अछि क्लोरोफ्लोरोकार्बन. यस तमानु कहितिले ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमर सबुठु अधिक हबो. त लास्ट रे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोटा अछि डिसेंडिंग कहिछि. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एठी अछि आ एठी अछि. दैट मींस हमें कोन ना सी को एंड डी को एलिमिनेट करिदेले. देन ता पूर्वरु नाइट्रस ऑक्साइड अछि, देन ठीक अछि. बट आपण माने को मु कहितिली मने पकांतु कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड रु मोर आपनकर कोन हैजार्डस मोर हैजार्डस कोन हबो ना मीथेन हबो कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑप्शन कोडा हमें राइट आंसर चूज करिवे ना मैम. यस एक जदि असेंडिंग पचार था ना जस्ट ताको उल्टे दबो. फास्ट किए अधिक हैजार्डस आसीबो ना सीएफसी आसीबो, तापर नाइट्रस ऑक्साइड आसीबो, देन मीथेन आसीबो, देन कार्बन डाइऑक्साइड. एटा को सर माने मैम माने पूरा माइंड रे फिक्स करि दियंतु. इज दैट क्लियर? ना रे लुसी देह भल नाही त माने क्लास को आसो ना मो देह आउरी खराब लागछ. चला which sector is a major source of methane emission? Which source is the major source of the methane emission? कहा को हमें कहि पारि. It's as the descending not ascending. हम descending wise ही आपण मानन को कहि ascending री कहि. Thank you. चला next color next. Which sector is a major source of methane emission? कौन अच्छी livestock agriculture, aviation, electronic manufacturing, urban transport. तो obviously livestock agriculture सहित ही आपण माने जिवे farming of the animals like the cows, sheep and the कौन goats हमें कहि परिबा methane emission टिके अधिक आस. जेंति कि cattle कौन कौन दी produce करंती methane during the कौन ना enteric formation digestion process रे तांकर जहाँ भी बाहरी जाए तो सेही हमर गोबर गैस रे आपण माने रिलेट करि पाबि. तो आपण माने डायरेक्टली manure with the management of the livestock agriculture with the methane emission directly. Relate kari paribe? Very good. Yes. Which of the following is an impact of ocean acidification? Ocean acidification ro कोटा गोटे important impact रहिबो हमरा option रे कुह. That is the coral bleaching, soil erosion, melting polar ice, commercial fishing. Declare. What will be the right answer?
yes ocean acidification सहित आमे कहा को ना always go with the option coral कोन बी काई ऑप्शन आसिला उमाकांत व्हाट हैपेंड बी आसीबनी ना ए आसीबो कोरल ब्लीचिंग सहित आसीबो फ्लोरल ब्लीचिंग कोन कहूची ना जते बेले आमे देखुचे that is a stress response in the coral where they expels the symbiotic algae polar bleaching हमर स्टार्टिंग कोठ हुए ना algae माना गोठु algal कहि परिबा टर्निंग हे से सडनली व्हाइट कलर हे से डी हबनी मैम कमर्शियल फिशिंग डिक्लेयर ना हबनी ओके कोरल ब्लीचिंग विल बी द राइट आंसर जोथरा पर ओशन एसिडिफिकेशन रिड्यूस करे कैल्शियम बायोकार्बोनेट अवेलेबिलिटी बढ़ाए इफेक्टिंग कोरल स्केलेटन तो कोरल ब्लीचिंग हमें कहि परिबा जे कि इंपैक्ट पकोची ओशन एसिडिफिकेशन से रिजल्ट रे कोन आसुचे हम देखुचे ना वीकन हे जाउची दैट कोन गिव द वेकनिंग एंड हम कहि परिबा डेथ ऑफ द कोरल रीफ्स धीरे धीरे सॉइल इरोजन तो हबनी आपण मान जानछन मेल्टिंग पोलर आइस तो ताकू छडा इनडायरेक्ट वर्सन कमर्शियल फिशिंग डिक्लाइन दैट इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द कोन कहबे फिश कॉट फॉर द सेल बट एमिति हमर कोन एतिके अमाउंट रो फिश बाहरुनी जतरे के हमर कोन मारी के हम समुद्र रे भसौचे जा पर हमर कोन ना एसिडिफिकेशन होची ओके चलो which layer of the atmosphere is mainly responsible for absorbing UV radiation? What will be the right answer? What will be the right answer? Which layer of the atmosphere is mainly responsible for absorbing UV radiation? कौन हबा कुआ ट्रोपोस्फियर तो हबनी स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर को डिलीट कर दोछि ट्रोपोस्फियर थर्मोस्फियर भीतर गोटे हां हां ट्रोपोस्फियर बोधे ट्रोपोस्फियर हबनी कहिले विवेक कहबे हां एटा ही हबो बोधे ट्रोपोस्फियर तो रहिला सबुटु फास्ट स्टार्टिंग एटमॉस्फेरिक लेयर हमें कहछ 0 टू 12 किलोमीटर पर्यंत जाउछि ट्रोपोस्फियर तो कंटेन्स हमें कौन कहि परिबा ना ट्रोपोस्फियर रे वाटर वेपर कंटेन करूची अबाउट द पोल्यूशन बट ओजोन लेयर सब बेले स्ट्रेटोस्फियर से जीव केते ना 12 टू 50 किलोमीटर पर्यंत रहबा स्ट्रेटोस्फियर 12 to 50 km. Is that okay? Very good. Chalo next. What is the main objective of the UNFCCC? Main objective of the UNFCCC कौन हबा कौन UNFCCC रो फुल फॉर्म अदागो कौन कहिलो that is the United Nations Framework Convention on Climate Change जोटी CC दीटा पाखा पाखी आस्तिबो सेते बडे संगे संग जानिबो क्लाइमेट चेंज ऊपर ही अछि ओके हां वेरी गुड केबे हबो ना 1992 रे हमर रियो अर्थ समिट अने पकई पारुछ पढिछ आगुरु रियो अर्थ समिट से रिलेट करिवो कौन करूथिला तार गोल कौन थिला रियो अर्थ समिट रो यस विवेक रियो अर्थ समिट रो गोल कौन थिला ना स्टेबलाइज करिवो ग्रीन हाउस गैस रो लेवल को कोथि पई टू प्रिवेंट द डेंजरस क्लाइमेट चेंज ताको स्टेबलाइज करिवो बट तार मेन रोल कौन थिला ना ता परे हमर रियो अर्थ समिट रो क्योटो प्रोटोकॉल फॉर्म हेतिला एंड पेरिस एग्रीमेंट आस्थिला ए रियो अर्थ रो आपण माने कहि परिबे कि यस मैम क्योटो आसीथिला एंड एठु ही हमर पेरिस एग्रीमेंट आस्थिला रिलेट करि परिबो वेरी गुड WTO ऑलरेडी जानिछ दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्लियर चलो नेक्स्ट and preserve the biodiversity जो आसीबो सेटा आपनकर CBD that is the convention on the convention on the biological diversity सेटा हमरा CBD फॉर्म करछि कोन जो ऑप्शन अछि आपन मानकर preserved biodiversity this is done by the CBD next देखो the largest share of human caused greenhouse gas emissions is from को मते The largest share of human caused greenhouse gas emission is from deforestation, combustion of fossil fuels, CFC emissions or vehicle tires. Already तो मानकु 50 थरडा कहि सलेनी हाफ एन आवर भितरे तो मते को कोन हबो largest share of the human caused greenhouse gases emission
very good. That is कौन ना because of the combustion of the fossil fuel ताको हमें relate करी परिबा. Deforestation काई हमनी because हमें जानी चाहिए cutting of the cutting हैला और burning fossil fuel directly relate करूची कौन कहाँ सहित हमरो greenhouse gas emission सहित. But deforestation contribute करूची carbon dioxide store करिबारे. Carbon dioxide store the releases the carbon dioxide stored in the trees that depend upon the deforestation सहित हमें relate करिबा. But combustion of the fossil fuel असले हमें कौन कहूँ ना burning of coal हैला oil हैला and gases हैला for the electricity transport and industrial uses ପାଇଁ हमें जेतेबेले करूचे that is related to the greenhouse gas emission. Clear? Yes, combustion of the greenhouse gas. चलो next. अच्छा ऑलरेडी टीचिंग रा भी बैच हमरा लॉन्च हे सारी छी आपण माने जानि थिबे कि आपनकर आर्ट्स रो एसएसबी टीजीटी बैच प्रभात 1 द्रोण 1.0 क्लासेस रा हमर प्रभात 1.0 थिला एठी द्रोण 1.0 अछि वैलिडिटी 1 ईयर अछि 1500 अप्रोक्सीमेटली आपनकर आसुची प्राइस उतरे 1 ईयर जाई किछि भी आपनकर टीचिंग रिलेटेड वैकेंसी आसिला आपण माने प्रिपेयर करि परिबे हम सहित. तो पीसीएम रो सेम थिंग अछि द्रोण 1.0 एसएसबी टीजीटी रा सब रहउची पीसीएम बैच रा आपनकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहउची फिजिक्स आपनकर रिया मैम देन योगेश सर आपनकर शताब्दी मैम होजंती आई एम इन द पार्ट ऑफ सीबीजेड आई एम कवरिंग योर बॉटनी पार्ट दैट इज द सीबीजेड. ओके वेरी गुड. Then देखो sea level rise is mainly a result of what? Sea level rise is mainly a result of what? What? Options are in front of you: evaporation of lakes, melting glaciers and thermal expansions of oceans, tsunamis, increased rainfall. ये दीटा को अपन कोन eliminate कर दियंतु. Then ma'am, can you relate greenhouse gas emissions to ozone depletion indirectly? Yes, indirectly kind directly करो. Yes. करो. So कौन हमारा right answer दिया मते? Option B, melting glaciers and the thermal expansion of the ocean. That will be the right answer. So evaporation of the lakes road asuchi, this is the process by which ame koi pariba water changes from the liquid to vapor form. A lake रे हुए. Okay, but जदि ame देखिछु melting glaciers and the thermal expansions of the ocean हम तक कहि परिबा कि yes ma'am the melting glaciers हैला ice sheet हैला से माने कोन करंती ना ऐड करंती more water to the ocean. हमें कहि परिबा सेतरे कोन लेवल राइज हुए. ओके ग्लेशियर जते बेले हमर बरफ तरलुची से वाटर लेवल को बढ़ौची सकी 50 कौन थिला 50 ना combustion of the fossil fuel ना ह्यूमन पचारी चलो नेक्स्ट देखो सुनामीज ता सहित तो रिलेट करबनी बिकॉज़ हम जानि छे ओशन लेवल वार्म हुए या फिर इंक्रीज हुए बाय द ग्लेशियर कोन मेल्ट हैला सुनामी सहित रिलेट करबनी. दिस इज द लार्ज सी वेव्स. नेक्स्ट which of these countries emits the most total carbon dioxide annually? Most total carbon dioxide किए annually कोन सबुठु अधिक annually carbon dioxide emit करूची. Options are India, USA, China और Russia. ये हबा राइट आंसर मते को जोठी पॉपुलेशन अधिक ऑब्वियसली सेठी ही हबा जोठी पॉपुलेशन अधिक सेठी ही हम सकवा. ओके सो राइट आंसर कोन हबा ना चाइना ही हबा. बट इंडिया को जदि पचरा होला इंडिया रा रैंक केते रहउची इंडिया रा रैंक ग्लोबली हमरा केते रहउची को. यस मैम इंडिया रा रैंक हमरा ग्लोबली थर्ड रहउची. ओके यस about हमें कहि परिबा 7% of global carbon dioxide emission is from India 2024 डाटा अनुसार थर्ड रहिबा. ओके सेकंड के रहउची ना हमरा यूएसए ऑब्वियसली सेकंड रहउची एंड फर्स्ट इज ऑलवेज कोन चिंग चांग चू. ओके हां लुसी एटा के बेहला 2025 रिकॉर्डिंग अनुसार बट एटा हम 2024 अनुसार हे जाइछ ना लुसी. ओके चलो तो
चाइना राइट आंसर हम आमर कोन ना वर्ल्ड रो लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर approximately 30% of the global emissions global carbon emissions is done by the kono na China. Okay, next one, which of these is a renewable energy sources? Which of these is a renewable energy sources? कोटा हबा कुआ renewable energy sources हमें कहा को लिंक करूचे. Yes, the renewable कहला means हमें कोन बार बार ताकू यूज करि परिबा. That can be renewed. Simply बुझी परिबा that can be renewed is the renewable. That means हमरा कोन ना solar आसीबो. Yes, solar आसीबो. कोल काई हबनी. The fossil fuel हमें कहि परिबा formed वे कोठू ना from the decayed the plant under the pressure. So that is what ना हमर coal form होची. That is हमर एटा कोन this is not a renewable. This is a non renewable हमें कहि परिबा. Yes, non conventional ही परिबा. But major carbon dioxide source हमर कोठू आसुची ना coal. So next oil वगैरह आपण माने जानि चंती natural gas confusion आसी पारे because fossil fuel made mostly of the methane जोटा कि CH4 करे आमे जानि that is the natural gas भाबरे हम यूज करूचे. That is cleaner than the coal but still this is non renewable. Okay, the main cause of ocean acidification is ocean acidification ro main reason कोन अछि मते कुहा. What is the main cause of the ocean acidification? Excess nitrogen runoff, increased carbon dioxide dissolution, oil spills, overfishing. Whatever. Overfishing nahi. Yes, the kono na increase in the carbon dioxide, what? Na dissolution. But upon man mind as to maybe excess nitrogen runoff of nitrogen like from the fertilizers entering the water bodies, that we can say that is the nitrogen runoff. So the fertilization the fertilizer company मानू को हमें stable करे देबा से माने तांकर drainage water को छाड़ी लेनी देन एटा हमें रोकी पारिबा acidification हबनी. That is controllable. That is not a non controllable situation. So हमें ताको relate करिबानी. But increase in the carbon dioxide dissolution हमें केते जणु को अटकेई परिबा करिबा कि no carbon dioxide from the atmosphere dissolves into the ocean. That already our atmosphere हि आसुची and forms the carbonic acid. Carbonic acid hela फल रे हमर कोन हमें कहू जे this is the acidification occurring the कोन ocean. Okay, oil spill हबनी leakage like oil leak हे कि हमर समुद्र सहित मिसिबो एते केते amount ro oil एमति आसीबो जे leak हे कि हमर समुद्र रे मिसिबो. So that is not possible na. So leakage of the oil into ocean that is not effective or that is not possible all the time. So pollute water हमें कहि परिबा किछि कोन marine species को मारि परिबा by the जदि marine species मानकर death केमिति होछि हम कहि परिबा that is the oil spill is the reason. That can be. Okay, चलो next. But the Paris Agreement was adopted in which year? एबे ही कहिथिली मते कुआ Paris Agreement केबे adopt हेतिला. जदि 19 घरे थिवो ताहले आपण माने फॉर श्योर कंफ्यूज हे जिवे ना कि. Yes, 2015. But 1997 1987 मने अछि तो क्रिप्टो सहित रियो सबमिट एडा सब रिलेट करि पारो जो. वेरी गुड. चला COP 21 2015 रिलेट करिवो COP 21 2015 सहित 2012 एंड 2015 भीतर का. ओके चलो यार मेन रोल कौन थिला ना 2 डिग्री मन रखो aiming for the 1.5 degree Celsius. कौन अछि ना limit the global warming to well below the 2 degree Celsius, that is 1.5 degree Celsius. 2 degree अछि ताको 1.5 degree को decrease करेगा. That is the main aim. Okay, चलो next which of these can reduce? Which of these? This is our last question maybe. Teaching रे भी class अछि यार जी. हाँ गणेश फ्री भरे जाइछ. So which of these can help reduce greenhouse gas emission? That is planting trees, that is burning more coal, increasing food waste or deforestation. What is the right answer? 25 जाए कर देबा. करो जल्दी जल्दी करो 25 जाए कर.
डिफॉरेस्टेशन को रोकिबा पई डिफॉरेस्टेशन अछि ना अच्छा सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन यस रिड्यूस करिवारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन दैट मींस हमर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया को पड़िबो ऑक्सीजन लेवल को केमिति बढ़ाइबा जदि प्लांटिंग करिवा ट्रीज को तो ऑब्वियसली प्लांटेशन द्वारा ही हेई परिबो कि नहीं हमर ट्रीज कैन एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कोन एटमॉस्फेयर सो दैट मींस हमें जति कि अधिक गछ लगेबा हमर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से कमिबो क्लियर दिस इज सो सिंपल एज दिस Next, 97% of the climate scientists agree that the climate is cooling, climate change is real and caused by humans. Greenhouse gases are not a problem. The moon effect temperature the most. कौन हबो इदिटा को तो मैं एलिमिनेट ही करि दोछि दुईटा ऑप्शन आपण माने पय छाडुछि को व्हाट वुड बी द राइट आंसर yes so the climate change is the real and caused by humans अल्टरनेटिवली आमे कहिबा ह्यूमंस माने ही करूचंती तो आमे कहि परिबा 97% ऑफ द क्लाइमेट लाइक एक्सपर्ट एग्री ऑन द आमे कहि परिबा त कोन एंथ्रोपोजेनिक द वर्ड आमे कहि परिबा दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक कहा कहूचे द ह्यूमन कॉज्ड दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज ओके तो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज 97% अपन कोन हमर एक्सपर्ट्स माने एग्री करिसंती दैट इज ड्यू टू द कोन एंथ्रोपोजेनिक बोली एविडेंस कोठो आसी अपन माने कर ना एमिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल ऑलरेडी कहिछि डिफॉरेस्टेशन हैला इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैला ए सब आसुची दैट लीड टू द व्हाट ना हमर कोन ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज ऊपर बहुत ताको लीड पक दैट्स व्हाई हमर रियो प्रोटोकॉल हैला पेरिस एग्रीमेंट हैला क्योटो प्रोटोकॉल आसला या पई ही आसीची कि हम माने कोन कार्बन एमिशन को गोटे बॉर्डर लाइन को रखि परिबा अपन कार्बन मैथड भी अछि जेतरा अपन माने कार्बन एमिशन को कोन कंट्रोल करि परिबे थ्रू दैट अपन माने गोटे टारगेट सेट करि परिबे एतिकरू अधिक कार्बन हमर कंट्री कोन एमिट करबो नाही ओके सो बहुत सारा जिंस अछि ताको अपन माने डीपली एप्लीकेशन को आसीले पढे तो को सिंस pre-industrial times atmospheric carbon dioxide has increased by about prehistoric time कथा कहछि बोले सॉरी प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स माने इंडस्ट्री जेबठु आसी नथला ता पूर्व टाइम ठु हमर एपर्यंत कार्बन डाइऑक्साइड केते इंक्रीज हेछि मते केते इंक्रीज हेछि 100% कोन कहछो पागल हेछि सब ज्योति फ्रस्ट्रेशन ना कोन दैट इज 30% केते इंक्रीज हेछि ना मैम 30% ओके यस 30% को धर ओके actually increase है 50% approximately हमें कहि परिबा 50% but 30% is हमें नउचे कोन widely accepted for the conservation of the estimate okay conservation of estimates according हमें 30% नउचे but approximately हमें केते ना 50% को नै परिबा चलो next which of the following is not a possible adverse effect of global warming sea level rise, increase UV radiation, glacier retreat, extreme weather patterns. What will be the right answer? What will be the right answer? Which of the following is not a possible adverse effect of the global warming? Yeah, that is the increase UV radiation. कोथरे ना increase in the UV radiation that आमे कहि परिबा कोन different सांगे सांगे आसी जीव हमर कोन एनवायरमेंटल इश्यू आसी जीव जोथरे के हम कोन कहि परिबा ना which of the following is not a possible adverse effect of the global warming yes not पचरिची that means हमर increase UV radiation सहित हेई परिबा because sea level तो सांगे सांगे राइज हेई जाय glacier retreat भी glacier जति हमर कोन मेल्ट हैला देन भी हमर सांगे सांगे कोन sea level rise हेई जीव then extreme weather pattern जति आसी गला जेमति अपन मानु कहली climate change सडा हमर storm आसिला heat wave आसिला ए सब रे हमर कोन glacier melt होय जोथरे कि sea level rise हेई जीव but हबनी कोटा increase in the UV radiation केमिति मैम बुझेरानी प्लीज कौन अच्छी न बुझी पाला बेले दीपक
So which of the following is not a possible adverse effect of the global warming? That means direct हमें कही परिबा गोटे effect पडुनी global warming रे. देखो global warming रे हमें कही परिबा sea level rise होची ना नहीं. Yes ma'am जदि global warming climate change होची ताले sea level रे हमर direct effect पडुची कारण glacier जते बेले आपनकर melt होची हमें कही परिबा sea level ऊपर तार increase आसुची संगे संगे तार melting होची तो एटा हमर direct effect पकेइबो. Then आसुची कोन ना एटा को eliminate करिथा. Then glacier retreat means कौन हमारा glacier टाको melt है कि sea level को raise करोची ना नहीं. Yes ma'am करोची. Then extreme weather pattern जेमती कि कहिले अपन कौन heat wave आसुची. It's okay विवेक. So हमें कौन कहूची जेमती heat wave आसुची, climate change आसुची, storm आसुची ए सब रे हमें कौन indirectly कहि परिबा कि glacier उडा melt है कि पुणी हमारा sea level को raise करूछंदी. But increase in the UV radiation हेटा हमारा suddenly हबनी. Increase UV radiation हेले ता सहित डायरेक्ट हमर कोन रिलेशन आसीबो कि सडन हमर कोन मेल्ट हे जिवो एमित हबनी ना सेतिर हमर ओजोन UV radiation सहित आपण माने डायरेक्ट कोन ना ओजोन लेयर डिप्लीशन सहित आसीबो ओजोन लेयर डिप्लीशन तापरे ओजोन लेयर धीरे धीरे होल हेई कि तापर पुनी सनलाइट पडिबो सेति कि रेडिएट क्रिएट हबो तापरे जाई कि हमर कोन ना ग्लेशियर रे कन्वर्जन स्टार्ट हबो. क्लियर. Next देखो what is carbon footprint? Carbon footprint कहा कहूचे the amount of carbon in the food or the amount of carbon dioxide emissions. देखो footprint अच्छी पिला बहुत confuse है. That is not food. Sorry, that is not food. That is footprint. Okay, पद चिन्ह ता सहित आपण रिलेट करि पारिबे. So amount of the carbon dioxide emissions caused by an individual entity or the carbon found in forest or the ways to sequester the carbon. कौन होगा राइट आंसर मते कुआ ऑप्शन ए बी सी डी व्हाट विल बी द राइट आंसर दैट इज द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड emissions caused by the individual footprint मीन जनकर फुटप्रिंट ऊपर हमें कंसीडर करूचे दैट मीन्स गोटे सिंगल पर्सन द्वारा केते की कार्बन इमिट होउची टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट दैट इज व्हाट द फुटप्रिंट ऑफ द कार्बन. क्लियर. Yes, that is the amount of the carbon. The total greenhouse gases हमें कही परिबा emission, the carbon dioxide equivalent directly and indirectly associated with a single person. तापर हमें देखुची total carbon केते emit होउची. Product हैला, organization हैला, or even the event हैला. तापर हमें calculate करूचे, but individual आगो count करूचे, तापर हमें जाइकी population wise count करूचे. Ma'am, अब केतेटा question? 8 is आरी दोउची because teaching रे भी class अछि मोर एबे. देखिबा कहि पारुछ ना नहीं but for now your classes end here. Okay, thank you guys. Thank you. Take care of yourself, but first of all do prioritize your parents. Thank you guys. Thank you. Thank you. Bye bye. And yes, राति रे class होबो न होबो सेटा ओडिसा जीके वाला मु Telegram रे इन्फॉर्म करिबी आपण माने सेतिरे टिके ट्यून हेकि रह. ओके, थैंक यू. चलो बाय बाय.